Everyone, good evening. I hope I'm visible and my screen is visible, I'm audible. So, if everything is fine, give me a go ahead and we can start with the session today. All right, so just confirm once if everything is in order and then we can get going. Once I get a go ahead, I'll start with the session. Yes, so I think everything is fine. I think we are good to go. Just give me a second. Yeah, I'll try to just fit this one. Right. Perfect. Okay. I think we should be fine now. All right. So, hello everyone, and welcome to this session. I'll just log in from my phone as well, so that in case there is some query or something, I can handle it. So, I'll try to attend it from my phone. All right. So, hello, good evening, everyone. We are going to do this session today on modern math. So today is the 13th day of the daily drill. And again, this is one topic that I am very excited about, honestly, because see, there are a lot of things that are there in terms of modern math that are interesting in nature. So there will be a lot of questions on, say, topics like progressions. There will be a lot of questions on, say, topics like permutations and combinations, probability, and so on. तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैट नॉट बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट कम राइट सो देर कैन बी अ टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रॉडली टू रीजंस रीजन वन देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट अपियर फ्रॉम दैट टॉपिक सो लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड डिस्टेंस तो टीएसडी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस there are a lot of different ways in which these questions can be asked and so on तो वहां पे that becomes an important topic modern math is an important topic purely because the number of concepts that you have to study are very less relatively. So if you look at a geometry, let's say, so the number of concepts that you have to learn, the number of things that you have to remember, retain is much larger. PNC, probability, set theory, some part of logarithms, progressions, ये सारी चीजों में you don't really have to memorize a lot of things. कुछ formulas होंगे but basic stuff you can manage those and you can easily handle questions if you know the basics of those questions, right? अब just that थोड़ा सा ambiguity होगा वहाँ पे. So that is basically the problem with modern math. That's why I like modern math as a as an area because you put in bare minimum effort and you should more or less get the return that you would deserve, right? So if there are one, two, three questions from modern math. At least one or two answers आपको आ जाने चाहिए उसके अंदर से. So that is the basic idea of modern math. Modern math. So make sure that modern math के अंदर you are not extremely scared of permutations and combinations or probability, right? Unless you are absolutely terrified of PNC and probability, I would strongly suggest कि at least basics तो कर लो and थोड़े 19-20 ऊपर के जो concepts है ना, even those you can manage, right? So that is basically what I would suggest very strongly from my side, that don't disregard modern math completely because
मे बी एक दो क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो डोंट डू दैट, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम डोंट डू दैट। मे बी इफ यू आर टॉकिंग टू मी इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, आई विल से कि हाँ ठीक है, यू कैन मे बी स्किप मॉडर्न मैथ, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम डेफिनेटली नो स्किपिंग मॉडर्न मैथ, इफ यू आस्क मी, राइट? हाय मोहम्मद, गुड इवनिंग, and good to see a lot of you today. So let's get going with the session. So what I will do is, again, I don't know how many of you have taken the test. So what I will do is I'll go to a particular question. I'll stay there for a minute, 45 seconds kind of a thing. And then I'll start solving the question. All of them are standalone questions today that we have. So try the first question out, and then we can start discussing the solution. All right. So that's the first question that we have. And again, my assumption is that you have a fair understanding of the basic formulas of NCR and NPR. So those are the ones that we are going to use more or less. And a basic application of NCR and NPR is something that you know, is what I'm assuming. तो वो assumption लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इफ देयर इज समथिंग दैट यू नॉट अंडरस्टूड एट सम पॉइंट इन टाइम, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, व्हाटएवर यू फील दैट नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी सोच सकते थे, प्लीज लेट मी नो। we'll try to discuss as much as we can for each of these 10 questions, and we'll try to handle as many doubts as we can, ठीक है? So that is basically what the first question looks like. So have a look at it, maybe 30-40 seconds you can have a look at it, and then we can start solving this particular question. ठीक है? And for those of you who have been our long standing subscribers, we have a nice surprise for you. So Sunday we are going to have another special session this time. So last time we did an ask me anything session wherein I took a lot of questions from all of you through comments, and that was a very nice interactive session that we had on Sunday morning. This Sunday morning also we have something special that we are going to announce in, maybe by tomorrow we'll be announcing, or tomorrow day after we'll be announcing what exactly is it going to be. But it is of course based on the feedback that we have received over the last many days across our videos. So we thought that we will do a topic which people have suggested, right? So that is what we are planning to do this time. So stay tuned for that particular activity, and I'm sure all of you will benefit from that particular event slash session slash spoiler workshop that we are going to do on Sunday. Okay, so let's get going with the first question. बहुत ही basic question है. The beauty of modern math questions is that they are very short. So I had a lot less curation to do in terms of the PPT. It was a fairly straightforward PPT. I just had to ensure that the alignment is fine. That's it. Otherwise, I didn't have anything to do in terms of the PPT. तो इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तो डोंट वरी। Now, let A, B, C, D, E, F, G, H and J, K. A, B, C, D, E, F, G, H, I नहीं है, J, K. The five diameters of a circle with center at O. In how many ways can 3 points be chosen out of A, B, C, D, E, F, G, H, J, K and O so as to form a triangle? So let's try to draw this and see what happens. अभी वो diameter पूरा draw करने की जरूरत नहीं है. Let's say for example this is the center O, and if AB is the diameter, the endpoints will be here. So AB will look something like this. Let's say CD will look something like this. Let's say EF will look something like this. Let's say GH will look something like this. And let's say JK will look something like this. Okay, so ये points है मेरे पास. Now I have to choose 3 points out of these points that exist, and we also have to form a triangle. I just check one, but I don't think that is the answer, Mohammed. So एक बार check कर लेते हैं. Let's see how it goes. ठीक है? There are some cases that need to be eliminated. That is the only trap here, right? Otherwise, it's a very straightforward question, and it was a theta question. So definitely वहाँ पे a lot of people would have made a mistake. ठीक है? Now, if I tell you कि I have so many points and I need to make a triangle, ठीक है? अभी forget about the center, forget about the diameter, forget about all those things. एक चीज याद रखना है, मेरे को अगर एक ट्राइंगल बनाना है तो मेरे को 3 points लगेंगे. If I have 3 points, I'll be able to make a triangle. Ashutosh, look at the number of points that have been asked. So A, B, C, D, E, F, G, H, A, G, H, J, K and O. So we have 11 points here. ठीक है? तो 11 points है. मेरे को ट्राइंगल बनाने के लिए 3 points लगेंगे. Now basically I have to select 3 points out of 11. Now if you know the basics of permutations and combinations, you'll be able to figure out if I have to select 3 points out of 11, that can be done in 11C3 ways. ठीक है? So 11C3 ways, NC3 correct Ashutosh. So 11C3 ways में you will be able to choose 3 points out of 11 in this particular context.
So what will happen in this case? So इसको अगर simplify करना है, I'll just write down the normal thing. So normal convention is this will be 11 factorial upon 11 minus 3 factorial into 3 factorial. ठीक है? Which will be nothing but 11 factorial upon 8 factorial multiplied by 3 factorial. This will be nothing but 11 into 10 into 9 into 8 factorial divided by 8 factorial multiplied by 3 factorial. Now these two 8 factorials will get cancelled out. 3 factorial is nothing but 6. So I'll write 6 here. Now you can cancel out a 3 from the numerator and the denominator. So 2 will remain here. And you will have 2 5s are 10. So you are going to get 11 into 5 into 3. That is 15 into 11. That is 165. Okay? So 165. 11 into 13 into 9 by 6. What is 11 into 13? 11 to 15 into 9, right? Yeah. Sorry, 11 into 15. Uh, जो भी whatever you got, right? So that was basically what we're looking at. 11 to 15 is 165. Yes. So 165 will basically be the total number of ways in which I can select 3 points out of 11. But now there is a problem. Let's say for example, we select A, O and B. ये 3 point अगर हम लोग select करते हैं ना, there will be no triangle. The triangle will not be possible. Why is a triangle not possible? Because A, O, B are something that we call collinear points. सो ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ये तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं ना, बिकॉज ओ लाइज ऑन ए बी. So all the diameters will not contribute to triangles. If you select AOB, one triangle is lost. COD, one triangle is lost. EOF, another triangle is lost. GOH, one more triangle is lost. And JOK, another triangle is lost. So we will not be able to make 5 triangles. We will not be able to make or draw 5 triangles. Except these 5 triangles, we should be done with everything else. Right? So ये वाला part अगर समझ में आ गया तो you will be able to crack this question very easily. Right? So except these 5 triangles, all of these 165 triangles would have been fine. So my answer will simply be 165 minus 5. So ये बनेगा 160. ठीक है. Mohammed, one thing that I can see is 155 you written ना. So maybe you thought that AOB and BOA will be two different selections. But selection के अंदर there is no order, that is it. ठीक है. So when I'm selecting 3 points, AOB is the same as ABO, is the same as OAB, is the same as OBA, is the same as BOA, is the same as BAO. तो ये सारे के सारे basically same ही selection होंगे. Right? So when we are selecting, the order is not important. So AOB का one selection will give me a line instead of a triangle. COD का one selection will give me a line instead of a triangle. वैसे we will have 5 selections that will not give us a triangle and will give us straight lines. Everything else, you take A, you take O, you take C, तो AOC में triangle बनेगा. You take ACE, उसमें भी triangle बनेगा. You take AJH, उसमें भी triangle बनेगा. Right? Only the 5 diameters will not give you triangles, and that's why 5 selections, 5 combinations are the ones that we have to skip. 165 minus 5, your answer will be 160. All right, all clear, I hope. Yeah, permutations will have order. So Ashutosh, generally I will not remember 11C3, 11P3. Honestly speaking, permutation का formula I will not use intuitively. पढ़ाने के लिए I might memorize it, but otherwise I will never put 11P3. Even if there is ordering involved. I'll simply say ऐसा 11 चीजें हैं, उसमें से 3 people you have to arrange or 3 people you have to select and rank them 1 to 3. First can be chosen in 11 ways, second can be chosen in 10 ways, third can be chosen in 9 ways, end of the story. So I'll generally not try to remember NPR का form. But permutations will have order, yes. ठीक है? Sure. Let's look at the next one. So this is a combination of logarithms and you can say progressions kind of a thing, yeah, or means, basically geometric mean. Yeah, Ashkosh, NCR into n factorial, NCR into n factorial नहीं, NCR into r factorial, I think, because they can be arranged among themselves in r factorial ways. So basically I have selected so many people. अब वो so many people जो r लोगों को मैंने select किया है, उनको I have to arrange among themselves in r factorial ways.
So that's why it will be NCR into R factorial. तो डिनोमिनेटर में से R factorial कट जाए. So have a look at this one, try it out on your own, maybe take a minute, and then we will start with the solution to this one. This is again a very interesting question, looks very difficult. Log है, base 3 है, base 12 है, base 6 है, geometric mean है, एक option के अंदर root a दिया हुआ है. So all those things are there, but again, as I generally say, sometimes you just have to take that leap of faith. So you know, you are very clear with the concept of geometric mean, you are very clear with the concept of the basis of logs. I think you should be fine. Yes, let me see if someone has got it. Hi Sumit, welcome to the channel. Alright, चलो let's look at this. So यहाँ पे again जितना हो सके ना उतना simplify करोगे तो better है. So there are two ways of thinking about this. I'll explain to you what logarithms are. ठीक है, तो एक basic छोटा सा 5 minute session kind of a thing on logarithms. So I'll just ask you one question. When I say log of 200 to the base 10, ठीक है, equals I say, let's say it's something, ठीक है, it's 2.303 कुछ तो, something, I'm just telling you a random number. 2.303 है log of 200 to the base 10. What does this mean? ठीक है, this basically means जब मैं ये लिखता हूँ ना log of 200 to the base 10, that is a question. This part is a question. It does not mean anything standalone. It is a question. The question is 10 raised to what gives me 200. Now I know that 10 raised to 0 is 1, 10 raised to 1 is 10, 10 square is 100 and 10 cube is 1000. So 10 raised to question mark is 200, ये में से पूछा गया है. I know for sure that 10 raised to question mark, जो question mark है ना, वो 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए. यहाँ पे कहीं पे तो ये question mark lie करना चाहिए. Obviously 1 point something नहीं हो सकता, because when we are looking at this, if it is 10 raised to 1 point something, my answer will be between 10 and 100. But my answer is between 100 and 1000, क्योंकि 200 पूछा हुआ है. That is why it will be 2.303. ठीक है, तो ये समझ लेना कि whenever there is a log of something to some base and it equals something, this basically means 10 raised to 2.303 या 301 जो भी will be equal to 200. That is basically the idea. If you know this, this will become much easier for you to solve. ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो. नहीं तो देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस एज वेल. ये जो जैसे ही ये वाला टर्म मिलता है ना, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से दिस इज नथिंग बट log x अपॉन log 3. तो मैंने दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट कर दिया. यू नीड नॉट इवन राइट 10. log x to the base 3 will basically be log x upon log 3. This is going to be equal to a according to the question. Also I know that log y upon log 12 will be equal to b. तो ये वाला भी पता है अपने को. सो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, दिस वन, आई जस्ट इरेज दिस पार्ट so that we have more space. But I hope you understood the concept, right? Whenever someone says log a to the base b, it basically is a question कि b raised to what will give me a as the answer. That is basically the question. Okay, so in this case what does this imply? I can simply
cross multiply and say that log x will be nothing but a times log 3. Or if you know the rules of logarithms, log x will be log 3 raised to a. And this therefore tells me x is nothing but 3 raised to a. एंड अगर मेरे को ये पता था कि ये वाला फॉर्म है, अगर यहां से यहां पे डायरेक्टली जंप करने अगर मुझे आता, आई नीड नॉट हैव डन 3 स्टेप्स. सो आई सिंपली से दिस इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? 3 रेज टू व्हाट गिव्स मी x. उसका आंसर इज a. सो 3 रेज टू a गिव्स मी x. दैट इज बेसिकली हाउ यू थिंक अबाउट. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे इफ यू डू दिस द सेम वे, आई डू इट अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस ऑफ यू आर नॉट वेरी गुड एट लॉग्स. दिस विल बी इक्वल टू b log 12. or in other words y will be equal to 12 raised to b. सेम लॉजिक है ना. log y will be equal to b log 12. b ऊपर चला जाएगा पावर में, it will be 12 raised to b. Fine. Alright, so this is basically what we get. अब ये first statement है. Now we know that g is the geometric mean of x and y. If g is the geometric mean of x and y, ये मेरे को पता होना चाहिए कि geometric mean of x and y will be root of xy. अगर 3 टर्म्स होते इट वुड हैव बीन द क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड. अगर 3 होते तो. अगर 4 टर्म्स होते एबीसीडी, इट वुड हैव बीन द फोर्थ रूट ऑफ एबीसीडी. और एबीसीडी रेज टू 1/4. प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रेज टू 1/4 ये होता. अभी यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई है. राइट. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई है. इसका मतलब क्या हो गया? दिस विल बी नथिंग बट रूट ऑफ 3 रेज टू ए इंटू 12 रेज टू बी. इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं. इसको मैं 3 रेज टू जो भी फॉर्म में, सॉरी 12 रेज टू ए. ठीक है. ये a ही है, b नहीं है. सॉरी, एवरीथिंग इज राइट. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू a. सो y इक्वल्स 12 रेज टू a आ जाएगा. एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट 3 रेज टू a इंटू 12 रेज टू a. सो यहाँ पे what is it that you're going to get? 3 रेज टू a. 12 is nothing but 3 into 4. 12 रेज टू a का मतलब क्या है? 12 into 12 into 12 into 12 a टाइम्स. नाउ हर एक 12 बनाने के लिए मेरे को एक 3 और एक 4 लगता है. 3 into 4 is 12. सो दिस विल बी नथिंग बट 3 रेज टू a मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू a. ये मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे. नाउ आई कैन सी हियर दैट इसको मैं अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो 3 रेज टू ए इंटू 3 रेज टू ए इंटू 2 रेज टू ए इंटू 2 रेज टू ए हो जाएगा. क्योंकि एक 4 बनाने के लिए मेरे को 2 2 लगते हैं. Those of you who are like good with numbers, you can simply say that we are going to talk about, yeah, Ashutosh, it would have been a b. Yeah. So in this case, what you are saying is, if you are good with numbers, you can say ये 3 raised to 2 है and ये 2 raised to 2 है. That's it. But I'm trying to remove the square root यहाँ पे. So यहाँ पे दो 3 raised to a है, तो यहाँ पे ये बाहर आएगा 3 raised to a. और यहाँ पे ये दो 2 raised to a है, तो ये बाहर आएगा 2 raised to a. Now 3 into 3 into 3 into 3 a times, 2 into 2 into 2 into 2 a times, you will get this as 6 raised to a. ठीक है. So the value of g is 6 raised to a. क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log g टू द बेस 6. अब इसका मतलब क्या बना? 6 रेज टू क्वेश्चन मार्क इज g. 6 रेज टू व्हाट इज g? 6 रेज टू a इज g. सो माय आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज a. सुमित 2a नहीं है, a होगा. यस, मेक सेंस. People try to put values and do this, but it could be slightly tricky in this case. क्योंकि अगर मैं x को 1 डाल दूं, y को 1 डाल दूं, all the options will match because it will be 0 at the end of the day. So that might not work always. So in this case, you just have to do it normally. इतना सब करने का जरूरत नहीं. So this is an entire block that you can skip पूरा का पूरा. You don't need to get into this part. This was only for your explanation. You can skip this part. ये पूरा का पूरा part. And ये वाला part भी पूरा निकल सकता है. Once you are here, you can directly jump to this place. You can simply say 12 is a 36 and 6 raised to a आ जाएगा. That is also fine. All right. So let's go to the next one. Try this one again and then we will discuss this. ठीक है. Square of the 7th term of an arithmetic progression with positive common difference equals the product of the 3rd and the 17th terms. The ratio of the first term to the common difference is what? So I just write the formula for those of you who don't know this.
So the nth term of an arithmetic progression is given by a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. Too many dependent variables, putting value won't work. Yeah, Ashutosh. And everything, मतलब सब कुछ zero आता है at the end of the day. You can't put one. You have to do something that is a power of 3, something that is also a power of 12. तो फिर 3 का power और 12 का power कहाँ से मेरे को मिलेगा? That is another question, right? So then it becomes very painful. Now you need something which is 12 square जो 3 का power भी जो मतलब सबका ही power बने. And then it's very very painful after that. So this is much quicker what we did. So variables are not recommended. Yes. Alright, so try this one. Then we will discuss this. So try it out for a minute and then we will discuss this one. So let's have a look at this one. Again, बहुत ज़्यादा complicate नहीं करना है चीज़ों को. You just go with the numbers that you have been given. With some instinct you can figure out कि अच्छा मेरे को यहाँ पे 6 square आएगा तो that will be 36. 2 into 16 will be 32. तो difference आ गया 4 का. And then you are saying that the product of the this thing the addition will be something else. यहाँ पे 18 होगा, वहाँ पे 12 होगा, and so 6 आएगा, and 6 and 4 and 2 and 3. So those things you can do visually as well if you are like really good at this, but normally अगर करेंगे तो भी जल्दी हो जाएगा. This is not a difficult question at all. Just put values, just put the terms in this formula and you should be fine. ठीक है. अब seventh term क्या होगा? T7 will be nothing but a plus 7 minus 1, that is 6d होगा. And T3 here will be similarly a plus 2d and T17 will be a plus 16d. ठीक है. अभी क्या बोला यहाँ पे? The square of the seventh term. So a plus 6d the whole square will be equal to the product of the third term and the 17th term. So a plus 2d into a plus 16d मेरे को यहाँ पे मिल जाए. Now if I just expand this, this will be nothing but a square plus 2 into a into 6d, which will be 12 times ad. And 6d का square, 6 का square 36, d का square d square. Similarly, यहाँ पे a into a will give you 1 a square. Then a into 16d will be 16 ad plus 2d into a will be 2 ad and 2d into 16d will be 32d square. ठीक है. A squares will get cancelled out. You will have 12 AD here. You will have 18 AD here. तो 12 अगर यहाँ पे चला जाएगा you will get 6 AD. 6 DA कर देते. ठीक है. 18 minus 12 is 6 AD and 36 D square minus 32 D square will be 4 times D square. Fine. Positive common difference है. इसका मतलब मैं इसको अच्छे से D को cancel out कर सकता हूँ. So what am I going to get? 6A equals 4d. Question क्या पूछा हुआ है? First term, that is a, to the common difference, that is d. So a by d will be nothing but 4 by 6 or 2 by 3. So the correct answer here will be option A, that is 2:3. Yeah. So let me know in case there is some confusion about something. But बहुत ही straightforward. There is nothing that needs to be done. You can visualize faster. That is the only thing that I can suggest. But otherwise, there is nothing that you will sort of need to worry about in this question, to be very honest.
Sakshi 5 month strategy video will be up, I think, tomorrow. All right. Ashutosh, yes, the answer was right. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं. यहाँ पे देयर इज अ वेरी नाइस फॉर्मूला. समवन हैड आस्क्ड मी दिस फॉर्मूला फ्यू डेज बैक. तो तभी मैंने बोला था कि मॉडर्न मैथ की वीडियो में वी विल डिस्कस दिस फॉर्मूला. So have a look at this question. Those of you who know how to solve this, just solve it, and you can share your answer if you have something. But for those of you who don't know, I'll just quickly share a small formula that exists here. ठीक है. I'll just tell you a very small concept. जल्दी जल्दी बता देता हूँ. Let's say for example you have 5 chocolates और सब एक जैसे दिखते हैं. ठीक है. These 5 chocolates are there. All of them look the same. Fine. Now what happens in this case is, let's say for example you have 3 children and you have to give these 3 chocolates to these 3 children. और अगर किसी को कुछ भी अगर मतलब देंगे तो they don't mind, right? So how exactly will they be able to, how many ways will you be able to distribute these 5 chocolates among these 3 kids? So 5 chocolates and 3 kids. ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब मेरे को एकदम ही इम्पार्शियल तरीके से करना है. Then what will I do? There is one way of doing it. What I will do is I will have 2 sticks here. मैं क्या करूंगा, वो 2 स्टिक्स ऐसे ही फेंक दूंगा, आंख बंद करके. आई विल जस्ट थ्रो दीज 2 स्टिक्स एंड वेर एवर दीज 2 स्टिक्स लाई, जो भी पार्टीशंस बनेंगे, आई विल गिव वट एवर इज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट स्टिक टू ए, बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टिक में जो भी है आई विल गिव टू बी, एंड वट एवर इज टू द राइट ऑफ द सेकंड स्टिक आई विल गिव टू सी. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्टिक यहाँ पे गिरता है, एक स्टिक यहाँ पे गिरता है, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन बना? ए विल गेट 1 चॉकलेट, बी विल गेट 1 चॉकलेट, सी विल गेट 3 चॉकलेट्स. ये सी के फेवर में आए. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट केस. I'll use another pen here. Let's say for example one stick falls here and one stick falls here. Now what will happen? Because of this, first stick के लेफ्ट में कितने हैं? 3 हैं. A will get 3. दोनों स्टिक के बीच में कुछ भी नहीं है तो 0. एंड ये स्टिक के राइट में कितने हैं? 2. So I'm going to get 2. So ऐसे करके there are a lot of combinations that are possible. But हम लोग कर क्या रहे हैं? What exactly are we trying to do in this particular case? We are trying to arrange 2 sticks which are identical. So 2 sticks that are similar and 5 chocolates that are also similar to each other. अगर मेरे को ये पता है, अगर मेरे को बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पता है, अरेंजमेंट्स अगर पता है, आई नो दैट आई एम गोइंग टू अरेंज 7 objects, right, which can be done in 7 factorial ways, but 5 of them are of one kind, एक जैसे सारे के सारे, तो 5 factorial. 2 of them are of another kind, तो 2 factorial से डिवाइड हो जाएगा. So you'll get 7 factorial upon 5 factorial 2 factorial. ठीक है, ये मिल जाएगा. ये करके you can easily distribute. Now the fundamental concept that is there in this question is, if there are 3 kids A B C, let's say A को A चॉकलेट मिलता है, B को B चॉकलेट मिलता है, C को C चॉकलेट मिलता है. पूरे मिला के वो कितने चॉकलेट देने हैं? 5 चॉकलेट्स देने हैं ना, राइट? नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस केस? इसका एक शॉर्टकट है, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है. देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ फॉर्मूला दैट अ लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर. द फॉर्मूला इज बेसिकली, इफ आई एम डूइंग A प्लस B प्लस C प्लस D टिल R, राइट, R ग्रुप्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं, एंड अगर टोटल मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, सो आई जस्ट राइट द फॉर्मूला हियर डायरेक्टली, और द कॉन्टेक्स्ट हियर, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस टिल R, तो मेरे पास R ग्रुप्स, ठीक है, एंड इन सबको मिला के मेरे को n ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. Then the formula here will be n plus r minus 1 c r minus 1. The number of positive integral solutions to this thing, or non-negative integral solutions to this thing, will be n plus r minus 1 c r minus 1. Non-negative integral solutions. इसको बस याद कर. And if you can't remember this, think of it like this. But ये वाला thought process might be difficult in these kind of questions, but manageable. I don't know. तो अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग ये चॉकलेट वाला ही देखते हैं, फिर इरेजर देख लेते हैं. इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 5 मेरे को दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ऑब्जेक्ट्स 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 3 ग्रुप्स में मेरे को डिवाइड करना है, -1 c 3 -1, तो ये क्या बनेगा? 5 प्लस 3 8 -1 7 c 3 -1 2. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट चेक इफ ओके आई हैव गॉन आउट ऑफ दिस. ठीक है, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर. It will be 7c2. What is 7c2? 7 factorial upon 5 factorial 2 factorial. So we have come back to this particular number. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे होता है, अगर a प्लस b प्लस c प्लस d ऐसे कर करके, if it goes on till r groups
एंड n ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r ग्रुप्स। अब ये n ऑब्जेक्ट्स सिमिलर होने चाहिए, ये r ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पे बच्चे अलग अलग है ना, बट चॉकलेट्स तो सिमिलर है। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिवाइड r ग्रुप्स के बीच में n ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट कैन बी डन इन n plus r minus 1 c r minus 1, which will give you 7c2 in this context। तो अगर मेरे को इसका कैलकुलेशन बिल्कुल बहुत मेहनत लग रहा है करना है, the answer will basically be 7 into 6 by 2, that is 21 for the previous question, not this one. I'm talking about this chocolates and 3 kids का distribution. Now if you have understood this, इसके आगे concept becomes much easier. अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, in how many ways can 7 identical erasers be distributed among 4 kids? So let's say the 4 kids are A, B, C and D. ये 4 kids के बीच में ना मेरे को 7 erasers distribute करने हैं, right? Such that each kid gets at least one eraser, but nobody gets more than 3 erasers. तो पहले ये वाला एड्रेस कर लेते हैं, एटलीस्ट वन इरेजर। अगर मेरे को सबको एक इरेजर देना है तो मैं क्या करूंगा, ये स्टिक्स फेंकने से पहले आई विल गिव वन इरेजर ईच ना, सबको एक एक इरेजर दे देता हूं पहले ही, तो झंझट खत्म हो गया। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव वन इरेजर टू बी, वन इरेजर टू ए, वन इरेजर टू सी, वन इरेजर टू डी। आई एम नाउ लेफ्ट विथ 3 इरेजर्स, ठीक है। एंड ये ऑल ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू क्राई इवन इफ दे गेट जीरो ना। अभी ये तीन में से किसी को जीरो मिला तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी गॉट वन इरेजर एंड दे नीड एटलीस्ट वन इरेजर, ठीक है। तो ये हो गया। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिवाइड थ्री इरेजर्स, थ्री सिमिलर इरेजर्स अमंग फोर पीपल? सेम फॉर्मूला, 3 plus 4 minus 1 that is 6 c, 4 minus 1 that is 3। 63 का वैल्यू क्या आएगा, 6 into 5 into 4 by 3 factorial, which will give me 20। ठीक है, तो एनसीआर वाला फॉर्मूला इफ यू आर वेरी गुड एट, 6c3 का फॉर्मूला इजीली आपको 20 मिल जाए। तो 20 है, बट एक और कंडीशन है, नोबडी गेट्स मोर देन 3 इरेजर्स। मतलब किसी को 3 इरेजर्स मिले तो चलेगा, बट 4 इरेजर्स किसी को मिल नहीं सकती। अब ये कंडीशन में 4 इरेजर्स कैसे मिलेंगे, मैंने सबको एक एक इरेजर ऑलरेडी दे रखा है ना। इफ दीज 3 इरेजर्स आर गिवन टू वन इंडिविजुअल, देन माय दिस कंडीशन गेट्स वायलेटेड ना। तो अगर मैं ए को 3 के 3 इरेजर्स दे दूं, माय कंडीशन गेट्स वायलेटेड। इफ बी गेट्स ऑल 3 इरेजर्स, माय कंडीशन गेट्स वायलेटेड। इफ सी गेट्स ऑल 3 इरेजर्स, माय कंडीशन गेट्स वायलेटेड। इफ डी गेट्स ऑल 3 इरेजर्स, माय कंडीशन गेट्स वायलेटेड। सो आउट ऑफ दीज 20 केसेस, 4 केसेस में मेरी कंडीशंस वायलेट हो रही है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 16। सो दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला टू रिमेंबर, मतलब बहुत लोगों ने ये शायद स्कूल में कॉलेज में नहीं सीखा होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट फॉर्मूला टू पिक। बट इफ यू नो योर कॉन्सेप्ट नाइसली, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर पता है, स्टिक्स एंड चॉकलेट्स वाला, अगर वो इफ यू नो द स्टार्स एंड बार्स अप्रोच है, सम पीपल कॉल इट, अगर वो पता है तो फिर यू विल बी एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। इसका एक इजी वाला भाई भी है, आगे एक क्वेश्चन आएगा विच इज मच इजियर देन दिस वन। बट टेस्ट के अंदर ऑर्डर ये था तो आई केप्ट दिस ऑर्डर, बट यू विल सी वन क्वेश्चन एट द वेरी एंड विच इज अ मच इजियर वेरिएंट ऑफ दिस वन। तो अगर वो नहीं, अगर ये समझ में आ गया तो वो वाला आपको बहुत इजीली आना चाहिए, और ये नहीं भी समझ में आ गया है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना एंड स्टे टिल द एंड एंड डू दैट लास्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला इन अ मच बेटर मैनर। Ashutosh, Monday to Friday, 8 p.m. onwards is when we do these sessions. So the test goes live around 10ish every night, and next evening 8 p.m. is when we discuss that particular test के questions. ठीक है? If someone has not understood this, let me know. I'll try to explain it to you again, but it's a very rigid formula as such. तो इसको मोर और लेस याद ही करना है, और तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट दैट स्टार्स एंड बार्स का जो स्टोरी बता ना, चॉकलेट और स्टिक वाला, दैट आई थिंक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दी फॉर्मूला, कि वो फॉर्मूला आता कहां से कर। ठीक है, हैव अ लुक एट दिस वन, ट्राई इट आउट फॉर अ मिनट एंड देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई बिलीव, या इट्स द फिफ्थ क्वेश्चन। सो हैव अ लुक एट इट फॉर अ मिनट, आराम से इसको देख लेना, ट्राई सॉल्विंग इट ऑन योर ओन एज वेल, देन आई विल स्टार्ट आफ्टर अ मिनट और सो। By the way, we are one subscriber short of the magic number 777. 7, yesterday I had written it.
777. I got no affinity as such. I just do it for memes. यस, चलो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। अगेन मैकेनिकली करना है इसको, और कुछ मेहनत नहीं करनी है। A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल A3n, वेरी इंपॉर्टेंट, 3n है यहाँ पे। Let it be an arithmetic progression with A1 as 3, A2 as 7. Now we know that A1 plus A2 till A3n is 1830. Then what is the smallest positive integer m such that m into whatever is greater than 1830? So that is basically the question. So we can do it normally and we can check what happens. A1 is 3, A2 is 7. तो इसका मतलब क्या बना? A1 that is the first term. A1 that is the first term is 3 and the common difference in this case is going to be 7 minus 3 क्योंकि arithmetic progression है ना, कोई भी दो टर्म्स के बीच का difference will be the same. So common difference होगा दोनों दो टर्म्स के बीच का, right? So the common difference will be 4 in this particular case. Now let's see what happens if I do this. So इसको अगर मैं एक फॉर्मूला के अंदर डाल दूं, let's say what will happen if I say a1 plus a2 plus a3 plus a4 and so on till the time I reach a3n. What will be the formula for this particular in this particular context? Normal sum का formula क्या होता है? Sum of the first n terms of an arithmetic progression is a by 2 into 2a plus n minus 1 times d. मेरे को सब कुछ n और d के फॉर्म में चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। यू कैन आल्सो डू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो भी चलेगा, बट यहाँ पे मेरे को a3n क्या वही नहीं पता ना, तो आई कांट फिगर आउट व्हाट इज a3n। आई कैन फिगर आउट a3n बाय यूजिंग दिस, बट देन बैकवर्ड्स मेरे को फिर से वो करना पड़ेगा। इधर वे इज फाइन, कोई भी इसमें मेथड चलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस 3n तक मेरे को करना है। सो माय फर्स्ट टर्म इज a1 डिवाइडेड बाय 2 into 2 टाइम्स a1 प्लस n। अब n मतलब 3n टर्म्स है ना यहाँ पे, तो ये 3n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। दिस वी नो इज इक्वल टू 1830। ये मेरे को मोर और लेस पता है यहाँ। ठीक है, सो a1 इंटू टू a1 एंड सो ऑन। a1 भी मेरे को 3 पता है, सो आई जस्ट राइट दिस एज 3 by 2 इंटू 2 3s are 6 प्लस 4 3s are 12 n माइनस 4 is 1830। ठीक है, तो दिस 3 will get cancelled out. I'll get 3 sixes are 18, 3 ones are 3 zeros are 0, 6 10, right? Yeah, 6 10 मिल जाएगा। यहाँ पे this will basically be 6 minus 4 that is 2, ये 2 cancel out हो जाएगा। I'll get 1 plus 6n, sorry, 1 plus 6n equals 610। Did I make some mistake somewhere? 6 minus 4 is 2 plus 12n, right? So 1 plus 6n was fine. All right. A by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Yeah, perfect, Sumit. That was basically what we are looking at. N by 2 कहाँ से आ गया? Shubham, which one is n by 2? It's a by 2, not n by 2. Oh yeah, sorry, n by 2. Yeah, perfect, perfect. This is n by 2. ठीक है? So, okay. So forget about this. It is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n terms are there. So n by 2 average बनेगा first term plus last term, right? So this is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. In this case, there are 3 n terms. So 3n by 2 आएगा। 2a, the first term, 2 3s are 6 आ जाएगा। n is again 3n minus 1 times d is 4. This has been given to us as 1830. So 3 cancel out हो जाएगा। 3 sixes are 18, 3 ones are 3 and 0 is what you're going to get here. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 6 प्लस 12 n माइनस 4 बाई 2 इक्वल 610।
ठीक है. So in this case 2 plus 12n, so which will be 1 plus 6n equals 610. 12n minus 4 is which one, Sumit? Which one are you mentioning? 12n minus 4 is 610 into 2 minus 6. That is fine. Perfect. So that will work. ठीक है. So अपने को 3n निकालना है. That is basically the point of this one. Oh yeah, I forgot about this n nicely. ठीक है. So n into 1 plus 6n is 610. Now by observation also यहाँ पे मिल जाएगा. अगर n का वैल्यू डायरेक्टली 10 लेते हैं तो we will be able to get this, right? Because 10 into 61 will be 610. So यहाँ पे n का वैल्यू you will get it as 10. अगर n equal to मेरे को 10 मिल जाता है, I know that this entire thing 3n will be nothing but 30. तो 30 टर्म्स की यहाँ पे बात हो रही थी. But then we don't need 30 terms. We just need a n तक मेरे को निकालना है ना. So यहाँ पे I will need to figure out what is the value of m such that m into a1 plus a2 till an. मतलब यहाँ पे a1 is 3, a2 is 7 and so on. तो चार चार का डिफरेंस करके अगर मैं a10 तक जाता हूँ, this should be greater than 1830 and m should be as less as is possible. So I basically need to figure out what is the sum of the first 10 terms of this arithmetic progression. 3, 7, 11 and so on. Now one way of doing it is you just figure out what is the 10th term and use this formula, तो बहुत easily हो जाएगा. या फिर normally इसमें भी करेंगे तो भी अपना काम निकल जाएगा. Now there are 10 terms, so I just write it here. 10 by 2 आ जाएगा. 2a is nothing but 2 3s are 6 plus n minus 1. 10 minus 1 9. 9 into 4 is 36. ठीक है. So you are going to get 42 divided by 2 21. तो ये 210 आ जाएगा. 210m has to be greater than 1830. 21m has to be greater than 183. 7m has to be greater than 61. So 7 sevens are 49, 7 8s are 56. m equal to 9 की सबसे smallest value पे 7m will be greater than 61. So the correct answer here will be option B, that is 9. Yes. So it was n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. I missed this. So n by 2 into 2a plus n minus 1 into d हो जाएगा. वहां से मेरे को n का वैल्यू मिल गया. This came by observation. 6n square plus n minus 610 से करेंगे तो भी मतलब if you think a bit you will be able to get it. क्योंकि n has to be an integer ना. Number of terms तो integer होना ही चाहिए whatever happens. If the number of terms needs to be an integer, there has to be something that you will need to try and figure out. तो 6n वहां पे दिया हुआ है. तो 6 का कोई तो मल्टीपल के आसपास कुछ होना चाहिए. So then that might tell you that 61 into 10 could be the number that we are looking for. And that way you will be able to get it. Alright, makes sense? Any doubts in this one? If you are confident enough, you can do a lot of this bit orally. Okay, so you need not write down this formula. ये पूरा का पूरा मतलब लिखने का जरूरत नहीं है. You can directly reach this step as well if you are like really well versed with numbers and everything. So when I had tried this on my own, I had reached this step directly. तो मेरे को n equal to 10 directly मिल गया था. That's why I did not go through this entire formula. ठीक है? So let's look at the next one. This is a very easy question which looks like a very difficult question. So let's have a look at this one. Again, I'll give you 30 odd seconds to get a head start, but it's a very easy question. So we'll just have a look at this and we'll see. Last two steps repeat. Okay. Last two steps कौन से थे? ये वाले. M into, so basically question क्या है? M into A1 plus A2 till AN है, right? So M into 3 plus 7 plus 11 plus 15 जो भी सीरीज बनेगा till 10 terms, that should be greater than 1830. अभी इसका सम क्या आएगा 10 टर्म्स तक का? आई नो द फर्स्ट टर्म, आई नो द कॉमन डिफरेंस, आई नो द नंबर ऑफ टर्म्स. तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड 10 टर्म्स क्या आएंगे इसके अंदर? n इक्वल टू 10 आएगा. सो 10 by 2 into 2a, 2 times the first term which is 2 3s are 6 plus n मतलब 10 minus 1 9
इंटू डी, डी कितना था, 4 था ना कॉमन डिफरेंस, सो 36. सो 6 प्लस 36 इज 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21 इंटू 10 इज 210. सो 210 इंटू एम करने से मेरे को 1830 के ऊपर का नंबर चाहिए. यू कैन से दैट 21 एम शुड बी ग्रेटर देन 183. तो 21 इंटू एम क्या नंबर करने से मेरे को 183 का नंबर मिलेगा. एंड यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है तो इंटीजर भी चाहिए. सो 21 8 जार 168, 21 9 जार 189. तो 183 के ऊपर अगर जाना है तो आई हैव टू रीच 189 व्हिच मींस m विल बी इक्वल टू 9. सो दैट वाज द लास्ट. ठीक है सुमित, आई होप इट वाज क्लियर. या ठीक है. चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे log ऑफ 2 रेज टू a इंटू 3 रेज टू b इंटू 5 रेज टू c दिया हुआ है एंड दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज थ्री. देन a इक्वल्स व्हाट. तो मेरे को सिर्फ a करना है यहाँ पे, राइट. सो a क्या है, 2 रेज टू a है ना, और 3 रेज टू b और 5 रेज टू c के अंदर 2 का पावर तो आएगा ही नहीं. तो अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट भी देख लूं तो मेरे को आंसर आ जाना चाहिए. दैट इज बेसिकली द आइडिया. बट लेट्स लुक एट इट एंटायरली एंड लेट्स सी वेयर दिस लीड्स अस. तो यहाँ पे व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज थ्री. It will be log of 2 square into 3 cubed into 5 plus log of 2 raised to 6 into 3 into 5 raised to 7 plus log of 2 into, sorry, 3 raised to 2 into 5 raised to 4. And this entire thing, if I divide by 3, then it will give me the arithmetic mean of this. So AM of this entire thing will be this. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया ना. सो आई एम जस्ट डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स दैट आर हियर. तो यहाँ पे 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 6 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 प्लस 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 3. सो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, तो 3 रेज टू 6 बनेगा. एंड 5 के पावर्स अगर ऐड करेंगे 1 प्लस 7 8 प्लस 4 12 हो जाएगा. ठीक है. एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3. दिस विल बी नथिंग बट 1/3 ऑफ द log of these three, which will mean it will be log of 2 raised to 9 into 3 raised to 6 into 5 raised to 12 the whole raised to 1/3. क्योंकि ये 1/3 ऊपर चला जाएगा तो वो पावर बन जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द पावर ऑफ 2. तो इसका वैल्यू क्या बनेगा देख लेते हैं. 9 इंटू 1/3 कितना बनेगा, 2 रेज टू 3 इंटू 6 सॉरी 3 रेज टू 6 इंटू 1/3 will be 3 square and 12 into 1/3 will be 5 raised to 4. तो 2 raised to 3 into 3 square into 5 raised to 4 आएगा. a is nothing but 2 का पावर and that's why a का वैल्यू बहुत सिंपली अगर देखेंगे it will be equal to 2. So the correct answer here is 2. Yeah, this has to be one of the easiest questions of this set. So just have a look at the solution. If you have not understood anything, let me. All right. And till that time, those of you who are done, you can have a look at the next question. So A1, A2, A3, A4, A5, let that be a sequence of 5 consecutive odd numbers. You have to consider a new sequence of 5 consecutive even numbers starting with 2 A3. So बीच का number जो है ना उसका twice. If the sum of the numbers in the new sequence is 450, then A5 is what? Now ये solve करने के लिए I'll give you one small technique. So just look at this one. So let's say 5 consecutive even numbers 2, 4, 6, 8, 10 है. What is the sum of these 5? Yeah. So 2 plus 4, 6 plus 6, 12, 20 and 30 है ना. What is 30 divided by 5? You will see it's the middle number. You look at anything. You look at 74 plus 76 plus 78 plus 80 plus 82. ये पांच का भी अगर सम ले लो ना, I think you are going to get 390 as the sum. What is 390 divided by 5? You will get the middle number. So that is your hint. तो ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया, you will be able to solve this very easily.
and this 2a plus 3 is the middle number. Yeah. So 2a3 अगर middle number है मेरे पास, consecutive even numbers ending with 2a3 rather. So 2a3 last number है in the sequence. So this is 2a3. So what will be the previous preceding even number क्या होगा? 2a3 minus 2 होगा. इसके पहले का even number क्या होगा? 2a3 minus 4 होगा. This is the third number in the sequence, right? फिर इसके पहले का नंबर होगा 2a3 minus 6 and this will be 2a3 minus 8. ठीक है, ये सबका सम कितना बन रहा है? वी हैव बीन टोल्ड दैट दिस सम इज 450. न्यू सीक्वेंस का सम इज 450. सो अगर ये मैं पांचों के पांचों को ऐड कर दूं तो मेरे को सम मिलेगा 450. बट वी हैव सीन दैट द मिडल टर्म इज नथिंग बट सम डिवाइडेड बाय 5. तो 450 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूं मेरे को मिलेगा 90. 90 विल बी नथिंग बट द मिडल टर्म ना. So I'll say 2a3 minus 4 is 90. So 2a3 will be 86. Oh, sorry, 94. So a3 will be 47. ठीक है, a3 47 है and we are talking about 5 consecutive odd numbers. तो a3 अगर 47 है, a4 will be the next odd number, a5 will be the next odd number. So a5 will be 51. That will be the answer. Again, one of the easier questions of the set. So any of the questions that are not understood, let me know. I'll wait here for 30 seconds. And if there's anything, please let me know. We'll see. Yeah, Sumit. I am a cat 100 percentiler. Cat 100 percentiler, CET 7 time 99.99 percentiler, some 3 time rank 1, IFT 100 percentiler, and so on. I love taking tests. And thankfully, my 100 percentility cat was when I was a serious aspirant. So that is a different story altogether. All right. So I'm assuming that all of you are able to get this. तो ये वाला एक क्वेश्चन देख लेना. It's a very simple question similar to what we had done. So I'll again tell you what the formula was. If you have a plus b plus c plus d till r objects and they have to be r groups and n objects are there, then the number of ways in which you will be able to do this non-negative. अच्छा हो गया. Oh, thank you Sakshi. 777 it seems. Non-negative integral solutions is given by n plus r minus 1 c r minus 1. That's it. Okay, so that is basically the number of non-negative integral solutions that you are going to get in this context. So again, try to satisfy these people's requirements first. So अमल को अगर एक पेन चाहिए, बिमल को एटलीस्ट दो चाहिए, कमल को एटलीस्ट थ्री चाहिए, तो वो बेसिक चीज उनको दे दो ना. And then whatever you have to do, you have at the end of it. So take 30 seconds, try to put it in this formula and try to solve it, and then we will see this solution as well. Alright. So एक बार देख लेते हैं. Amal, Bimal, and Kamal are three people, and there are 8 pens, identical pens. अब identical बहुत important है, that need to be distributed among these 3 people. ठीक है. So यहाँ पे I have to satisfy this condition that Amal should get at least 1 pen, Bimal should get at least 2 pens, and Kamal should get at least 3 pens. तो मैं क्या करूंगा? Out of these 8 pens ना, एक दो तीन दे दूंगा ना ऑलरेडी, क्योंकि वो तो मैंडेटरी कंडीशन है. तो now I have given away 6 pens. Now I'm left with 2 and I don't really mind किसको क्या मिलता है. So A B K में से अगर किसी एक को दो के दो पेन मिल गए तो भी चलेगा, because we have satisfied their basic requirement. If someone gets 2 pens, someone gets 1 pen, it's fine. 0 pens, it's fine. Someone gets 1 pen and someone else gets 1 pen, even then it's fine. So anything is okay. So I have to divide two similar objects into three distinct groups. I'll be able to do it in 2 plus 3 minus 1, C3 minus 1, or 4 C2. That is 4 factorial by 2 factorial 2 factorial,
और 4 into 3 by 2 factorial, that is 6 ways. So once you know the formula, it's very easy for you to get it. 4c2 अगर 6 याद भी रहता तो it's great. So with practice, I'm sure you will be able to remember 4c2 is 6, 5c2 is 10, 6c2 is 15 and so on, 21 and so on. तो वो सब मतलब you'll be able to remember as you go forward. But अभी के लिए I hope the formula is clear. ये वाला formula अगर समझ में आ जाता है ना तो your life becomes much easier. और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बीच बीच में कैट में आते रहते हैं. सो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसको एक बार समझ लेना. एंड आई थिंक दैट शुड डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इफ क्विकली. दैट इज द बेसिक आइडिया. ठीक है. एनी डाउट्स इन द कॉन्सेप्ट? आई होप दैट कॉन्सेप्ट वाज क्लियर. किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो गो बैक टू द चॉकलेट्स एंड स्टिक्स वाला एग्जांपल दैट वी हैड डन इन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 इफ आई रिमेंबर करेक्टली. So go back to that question and फिर उसके बाद you will be able to understand these questions very quickly. Yes, Sumit, 6 is the answer. Yes. Sumit, these are cat questions. That is the beauty of these sessions. ये सारे cat questions. Maybe I will change a number here and there, but for all practical purposes ये सारे cat questions. और कैट लेवल है. सो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना तो ये थोड़ा सा 2017 पे मोर और लेस बेस्ड है क्वेश्चंस. एज वी मूव हेड जैसे 2018 आएगा 2018 विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. फिर 19 20 21 विल बिकम स्लाइटली मॉडरेटिश एंड देन 23 विल अगेन बी अ नाइटमेयर. तो वो धीरे 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 अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बीच बीच में मैं स्विच करते रहूंगा. सो दैट्स बेसिकली हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. अभी के लिए मतलब बिकॉज ऑल ऑफ अस आर न्यू यहाँ पे एंड वी आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ अस आर स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन तो मैंने थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी नीचे रखा हुआ है. बट दिस इज एक्चुअल कैट सो उसमें कोई वो नहीं है. मतलब देर इज नो डिबेट कि वेदर दिस इज कैट लेवल और नॉट बिकॉज दिस इज कैट. राइट. Alright. Infinite geometric progression है. So I'll give you one formula. You can try it on your own for a bit. But the formula is for an infinite geometric progression. Okay, I'm so sorry. For an infinite geometric progression, if I want to figure out what is the sum of all the terms, so sum of the progression, infinite geometric progression will be a upon 1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio. तो अभी तक हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख. So a upon 1 minus r will be the sum of an infinite GP. Was the first term, r was the common ratio. Sumit, I took it in that slot. So slot 3 CAT 2023 was possibly the toughest quant section of CAT 2023 as well. ठीक है. तो CAT 23 का slot 1 slot 2 देखोगे you might see 3-4 questions जो manageable थे. Slot 3 में honestly I couldn't find a lot of questions to solve during the test. तो and I knew कि वो difficult. I knew बाकी दो स्लॉट्स के एनालिसिस से कि वो डिफिकल्ट स्लॉट है, डिफिकल्ट सेक्शन है. आई न्यू बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट आई सॉ. तो आई रिमेम्बर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आई सॉ मेरा नहीं सॉल्व हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चंस आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है करके. देन आई वेंट टू द 22nd क्वेश्चन, वहां पे भी समझ में नहीं आया. देन आई वाज लाइक अरे तो गड़बड़ हो गया. तो आई वेंट टू द 16th क्वेश्चन, बीच का कोई क्वेश्चन पकड़ लिया एंड दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई सॉल्व्ड आफ्टर मे बी 6-7 मिनट्स इनटू द सेक्शन. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था फॉर मी एज वेल. I ended up solving questions, 15-16 questions I ended up solving at the end, but not a very happy attempt, so to say. Overall, it didn't matter much in my overall score, for my overall score, but मतलब हाँ, it was very mentally draining. ठीक है. चलो ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन. दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला दैट यू नीड. इनफाइनाइट जीपी का सम. अब इनफाइनाइट जीपी में क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट जीपी शुड बी अ डिक्रीजिंग जीपी. तो अगर वो डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ही वो इनफाइनाइट का सम आएगा. अगर इंक्रीजिंग है, लेट्स से दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 into 2 2 2 2 4 2 8 2 16, इसका सम अगर मैं लेता जाऊं तो मेरा सम इन्फिनिट होगा ना, बहुत बड़ा नंबर मेरा सम आएगा. आई विल नेवर बी एबल टू गेट दैट नंबर. दिस फॉर्मूला इज फॉर केसेस जहां पे अगर फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म हाफ है, थर्ड टर्म 1/4 है, देन 1/8, देन 1/16, ये अगर सीक्वेंस बनता है ना तो दिस सम विल कन्वर्ज टुवर्ड्स अ पॉइंट एंड देन a अपॉन 1 माइनस r. तो इसका सम कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म 1 अपॉन कॉमन रेशियो तो हाफ है,
तो 1 minus half. So you are going to get 1 upon half, that is 2. ठीक है, so इसका सम ये आएगा. Now let's look at the question that we have. Infinite geometric progression a1, a2, a3 has the property that an is nothing but 3 into an plus 1 plus an plus 2 and so on for every n greater than or equal to 1. Now the sum a1 plus a2 plus a3 ऐसे करते जाएंगे तो 32 आता है. Then a5 is what? That is basically the question. ठीक है, so in this case again manageable question है. You just have to figure out sorry, you just have to figure out in this context कि इसको use कैसे करना है, right? So an is nothing but 3 into an plus 1 n plus 2 ऐसे करते जाएंगे for the infinite geometric progression, and an is basically the nth term that we have, right? So in this case how exactly do we use this? That is more or less you have to figure. फाइन, अभी यहाँ पे a1 plus a2 plus a3 ऐसे करते जाएंगे till an, let's say for example that is a32, ये मेरे को बोला गया है. So a1 plus a2 plus a3 till a32 अगर मैं करता an करता जाऊं, sorry an, this is going to be 32. ठीक है, so this is something that we know. Now how do we apply this geometric progression का formula to figure out what exactly or how exactly are we going to get this particular sum? ठीक है, तो ये अगर मेरे को समझ में आ जाता है तो I should be fine. So have a look at this one. Maybe you can try it out for a bit and then you can easily get this particular question. तो एक बार देख लेना, जस्ट लुक एट इट फॉर मे बी अ मिनट एंड सी इफ इसको ये वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं. इफ यू आर एबल टू डू इट, मोर और लेस यू विल बी एबल टू गेट द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी इजीली. उसको आर ही रख देना, यू नीड नॉट इवन चेंज इट टू a2 by a1. वो सब भी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट एज आर एंड यू शुड बी फाइन. लेट मी लुक एट द चैट फॉर अ सेकेंड. ठीक है, चलो इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. यहाँ पे इफ यू आर सेइंग दैट a1 a2 a3 till an करेंगे तो 32 आएगा. दैट इज समथिंग दैट वी नो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. तो मेरे को क्या पता चलेगा यहाँ पे, a अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, a upon 1 minus r for this infinite gp is going to give me the sum as 32. So I can say a1 in this case upon 1 minus r common ratio जो है इसका sum is 32. That is something that we know in this particular context. ठीक है, what else do we know? an sorry is equal to 3 into n plus 1 n plus 2 n plus 3 and so on. तो यहाँ पे ना n के जगह पे अपन इसको 1 डाल देते हैं. So a1 will be 3 into a2 plus a3 and so on till the time you reach an or whatever. Infinite है ना ये पूरा, a infinity तक जाएगा ये. This is what it means. So in this particular context, I also know that a1 will be equal to 3 into, ठीक है. अब a2 plus a3 plus a4 ये भी तो एक infinite gp है. What is the value of a2? a2 is nothing but a1 into r ना. a2 is nothing but a1 into r. a3 is nothing but a1 into r square. a4 is a1 into r cube and so on. ये चलता जाएगा. तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट टर्म जो होगा यहाँ पे, दैट विल बी a1 into r अपॉन 1 माइनस r. तो ये फॉर्मूला तो वही रहता है, वो तो चेंज नहीं होने वाला. जस्ट दैट यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 था, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म a2 है. So a1 is also equal to 3 into a1 times r upon 1 minus r. अब यहाँ पे मैं a1 को कैंसल आउट कर सकता हूँ. So I'm going to get 1 minus r equals 3r और I'm going to get 4r equals 1, r equal to 1 by 4. तो मेरे को यहाँ पे r equal to 1 by 4 मिल जाएगा. I also knew that a1 upon 1 minus r is 32. ये भी मेरे को पता था. So I can just plug in the value of r and can figure out a1 का value. So a1 is 32 into 1 minus r और 32 into 1 minus 1 by 4. This is 32 into 3 by 4. 4 8 जा 32. a1 आएगा 24. ठीक है, a1 will be 24. Now the question is a5 क्या है? a5 is nothing but a1 into r raised to 4. a1 कितना है? a1 was 24 according to our this thing and r raised to 4 है. So 1 by 4 into 1 by 4
into 1 by 4 into 1 by 4. I'll write it like this. ठीक है. I can cancel out of 4. 6 are 24. यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 2. So you will have 3 in the numerator upon 2 4s are 8 4s are 32. Yeah. So the correct answer will be option C, 3 by 32. I hope everything is visible. Yeah, everything is visible. So again, have a look at this. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर, you can ask a question. मतलब it's everything is formula based here, right? So infinite GP का sum अगर मेरे को पता है a upon 1 minus r, I will be able to manage this question very easy. तो दो बार लगाना पड़ेगा मेरे को. एक बार a1 to an या a infinity जो भी हम लोग इसको बोले, it will be a1 upon 1 minus r, that is equal to 32 is the first equation that we got because of this. एंड सेकेंड इक्वेशन में हमने यहाँ पे n के जगह पे 1 डाल दिया बिकॉज इट इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो n को 1 डाल देंगे, a1 इक्वल टू यू विल गेट 3 into a2 a3 a4 एंड सो ऑन. बट a2 का वैल्यू इज नथिंग बट a1 टाइम्स r. a1 कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. ठीक है. आई शो द नेक्स्ट वन. इन केस यू आर नॉट अंडरस्टूड एनी ऑफ द प्रीवियस वंस, लेट मी नो इन द चैट. आई ट्राई टू रिजॉल्व इट. ये लास्ट क्वेश्चन है. अगेन दिस इज अ प्रोटोटाइप. This is one of those questions which either you know or you don't, but you can use a calculator for this. तो अगर बहुत ही स्मार्टली इसको करना है तो थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेना एंड यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर टू दिस बिकॉज ऑप्शंस बहुत दूर हैं. एक ऑप्शन है ऑलमोस्ट 1/6 है फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज 1/2. थर्ड ऑप्शन इज 1/4. फोर्थ ऑप्शन इज ग्रेटर देन 2. राइट. सो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल सी दैट द सम विल कन्वर्ज टुवर्ड्स अ पॉइंट. एक टाइम के बाद डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा दैट इट विल नॉट एड अ लॉट टू योर सम, and that is basically where you have to figure out what needs to be done. So I'll wait here for 30 seconds and then we will solve this, and this is the last question of this. तो यहाँ पे बस एक चीज I'll give you a small spoiler for those of you who are doing this. अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5 minus 2 upon 2 into 5, I can write this as 5 upon 2 into 5 minus 2 upon 2 into 5, which will effectively be 1/2 minus 1/4. So इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. दैट इज द आइडिया. ये आइडिया अगर समझ में आ जाता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी नाइसली वेरी क्विकली एज वेल. यस. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. नाउ यू कैन सी ना यहाँ पे a1 a2 a3 का मेरे को सम निकालना है, राइट? एंड दिस इज 2 into 5, दिस इज 5 into 8, दिस इज 8 into 11. दिस टेल्स यू दैट द गैप हियर इज कंसिस्टेंट. एंड इफ यू नो दैट दिस कॉन्सेप्ट, अगर मैं ऊपर का गैप भी 3 कर दूं हर जगह पे, इट विल बी 5 minus 2 upon 2 into 5. अगर इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ 5 minus 2 को, then 5 upon 2 into 5 minus 2 upon 2 into 5. You can cancel out a few things here and there and you will be able to get this. ठीक है. So that's basically what we are looking at in this particular context. Okay, just give me a second. I think all right, yeah. So my video feed went for a bit. Let's see this again. ठीक है. So all right. So in this particular context, यहाँ पे मेरे को पता है कि the gap is consistently 3. So यहाँ पे there is one small thing that you need to observe. तो यहाँ पे 1 upon 2 into 5 है ना, तो my first term is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 एंड ऐसे करते जाएंगे टिल द टाइम वी रीच a100. तो फर्स्ट टर्म के अंदर 2 आता है, सेकेंड टर्म के अंदर 5 आता है, थर्ड टर्म के अंदर 8 आता है, तो 3 का जंप है ना. सो दिस इज नथिंग बट 3 into 1 minus 1. दिस इज 3 into 2 minus 1. 5 जो है 3 into 3 minus 1 will give me this term. तो 100th टर्म में क्या होगा 3 into 100 minus 1.
So my last term in the series is going to be 300 minus 1, that is 299 multiplied by 3 ज्यादा उससे, so 302. ठीक है, सो दिस बेसिकली बिकम्स माय सीक्वेंस. अभी यहाँ पे गैप 3 का है ना हर जगह पे, सो मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3. सो 1/3 इंटू 3 इंटू 2/5, 3/2 इंटू 5 प्लस 3/5 इंटू 8 प्लस 3/8 इंटू 11 and so on till the time I reach 3/299 into 302. I hope the last term is visible. Yeah, it's barely visible but it is. ठीक है, now this is basically what it looks like. अभी इसको हम लोग ऐसे ऑपरेट करेंगे, राइट यहाँ पे जो लिखा था एग्जैक्टली वही चीज करेंगे. सो 1/3 आई राइट लाइक दिस, एंड ये 3 जो है ना उसको मैं 5 minus 2 लिख दूंगा, राइट, विच इफेक्टिवली बिकम्स 5/2 into 5 minus 2/2 into 5, विच इफेक्टिवली इज 1/2 minus 1/5. तो ये वाला जो पार्ट है ना पूरा का पूरा, ये 1/2 minus 1/5 बन जाता है. बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन ऑल्सो से दैट यहाँ पे ये बनेगा प्लस 1/5 minus 1/8, ये वाला बनेगा प्लस 1/8 माइनस 1/11, एंड ऐसे करते जाएंगे टिल द टाइम आई रीच प्लस 1/299 माइनस 1/302. ओके, प्लस 1/299 1/302. नाउ यू विल सी दैट दीस टर्म्स गेट कैंसल्ड आउट. ये सब अगल बगल के टर्म्स हैं, सारे कैंसल आउट हो जाएंगे. सो व्हाट विल आई बी लेफ्ट विथ, 1/3 इंटू 1/2 विल रिमेन एज इट इज माइनस 1/302. तो ये क्या होगा, 302 minus 2 that is 300 divided by 3 into 302 into 2. I'll just keep it as it is, 302 into, ठीक है, तो ये 3 कट जाएगा, ये बनेगा 100, ये 2 कट जाएगा, ये बनेगा 50, एंड ये 2 कट जाएगा, ये रहेगा 151, ये बनेगा 25. सो माय आंसर इज 25/151. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को इतना झंझट नहीं करना है, मेरा ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर. So what I'll do is I'll use my on-screen calculator. So of course we don't have an on-screen calculator now. I'll just try to put it manually and tell you what it looks like. So first term तो 1/10 है, तो 0.1 आएगा. Second term is 1/40. So 1 divided by 40 will be 0.025. Third term is 1/88. 0.011. Fourth term will be 11 into 14. 1/154 कुछ आएगा. ये होगा 0.006. तो ये बहुत छोटा नंबर होते जा रहा है. सो अभी तक मैं कहां पे पहुंचा हूं, 0.12, 0.13, 0.14, मैं अप्रोक्सीमेटली 0.14 पहुंचा हूं. अब ये 0.14 के आगे जो टर्म्स होंगे ना बहुत छोटे 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 होते जाएंगे. सो वो सब टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो मैं 1/2 0.5 तक पहुंच सकता हूँ क्या, मतलब अभी तक, अभी मेरा मतलब खत्म हो गया है स्टेमिना, राइट, 0.14 पे. हाउ कैन आई रीच 0.5 विच इज मोर देन ट्रिपल ऑफ दिस. 1/4 0.25, आई एम बेयरली एट हाफ. वहां से 0.25 कब होगा, बहुत टाइम लगेगा. 100 टर्म्स में तो बहुत मुश्किल लग रहा है. 111/55 तो अलग टेंजेंट पे चला गया, तो बोल रहे 2 प्लस है करके. डेफिनेटली नो. सो 1/6 ये जो है ना 1/6, 0.16 अप्रोक्सीमेटली, दिस लुक्स लाइक अ नाइस ऑप्शन बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू दिस वन. तो इसमें अगर मैं और 94, 95, 96 टर्म्स ऐड कर दूं, आई एम गोइंग टू गेट 0.16. वहां तक तो पहुंच सकता हूं मैं. बाकी एवरीथिंग इज वे फर्दर देन वेयर आई शुड हैव बीन, right, and that is basically something that will tell me that my answer is option A, that is 25/151. All right, so that was the last question. If there are any doubts, I'll just answer them. Naito will close the session for today, and if you have anything that you get after the session is done, then maybe you can just put it in the comment section. I'll try to address those doubts in the comments directly. तो कुछ भी है तो let me know, ठीक है? And I'll just check once about tomorrow. Just give me a second, okay? All right, anyway. So tomorrow we'll have another daily drill. Uh, just give me a second. I'll just check what daily drill it is. 14th, right? Yeah. Tomorrow is reading comprehension. So this is the third reading comprehension daily drill, I believe. So again, the test will be up by 10 today. So in the next half an hour, 1 hour or so, the test will be up. You can take it at any point in time today, night to night, or tomorrow.
according to your convenience. Maybe even after that you can take it. It's not a problem at all. And then you can turn up for the session. तो कल हम लोग RCs discuss करेंगे. I think there will be two RCs, 2 or 3 RCs. I think depending on the number of questions that will be there, and we'll be discussing those RCs tomorrow in the session. ठीक है? चलो. So thank you everyone for turning up for the session. I hope you are able to get more clarity in terms of what it means to do well at modern math. There are a lot of calculations involved, but formulas बहुत basic हैं. Straight for formulas को apply करेंगे, you will be able to get the answer. ठीक है? All right. चलो. So thank you everyone for turning up and have a great evening ahead of you. I'll see you again tomorrow with the reading.